Dear students, our today's topic is concentration terms. The second part of this concentration terms, we are going to discuss about an important topic, that is percent composition. Now see here, what is percent composition? The term percent composition belongs to something out of 100. Something out of 100. Now there are three portion of this percent composition. You can categorize it in three part. The first one is mass percent, that is W by W. Second one is volume percent, that is V by V. And third is mass by volume percentage, that is M by V. See where it is used. If you see a bottle of a drug or medicine, you see here. Here it is given, that is the composition diclofenac diethylamine, that is 1 by 16% W by W. W by W here is mass percent. 3% W by W, 10% W by W, 100% W by W, so on. Okay, so it is where it is used. I mean to say, on several drug bottles you may find this. Now see, first we have take mass percentage. The first part of this is mass percentage. It is indicated by W by W percentage. The symbol of is W by W percentage. Now percentage is आउट ऑफ 100. परसेंटेज का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 कोई चीज़ कितनी है. तो हियर वी वॉन्ट से इट इज सॉल्यूट, वी वॉन्ट से इट इज सॉल्वेंट. हियर इट विल बी कंपोनेंट्स. तो मास परसेंटेज कैन बी गिवन बाय mass of any one component, may it be a solute or solvent. Say it is in gram, divided by total mass of all component. Now all component we can have total mass of the solution, because solution itself means all components. Now you see, this is the definition of, or the formula of W by W, that is mass percentage. And here one more thing, because it is out of 100, then multiply with 100 the mass of any one component, thereby total mass of the solution into 100. Suppose if we do not multiply with 100, then it becomes mass fraction. But we are just talking about mass percentage. Simply we can say WB over WS into 100. Now W is the mass of any one component, that is solute, upon WS mass of solution into 100. Similarly we can have WA
upon WS into 100. As in my yesterday's topic, I told you that we take A as solvent, B as solute, and S as solution. Now this is the complete definition of mass percentage. Okay, complete formula. Now I'll take one example. The example which you see, if it is given 10% W by W glucose solution in water, what does it mean? 10% W by W glucose solution in water, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज plus 90 ग्राम, because the total solution that should be of 100 ग्राम, total solution आपका 100 ग्राम होना चाहिए. तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम बोथ इन मास, दोनों मास के रूप में लेंगे. तो 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर, तो देन ये बनता है 100% सोल्यूशन. अब ये 10% कैसे आया देखिए, लेट्स सी. 10 ग्राम glucose, that is mass of one component, total mass of all the component, so 10 plus 90, total mass of solution, that is 100 gram into 100, 100 से 100 cancel, you have 10% W by W. तो ये आपका 10% जो W by W का जो कंपोजिशन है ये आ गया. तो 10% ग्लूकोज का मतलब ये चीज. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज. नाउ द वॉल्यूम परसेंटेज symbol is V by V. It is taken for liquid. जनरली जब कोई चीज़ लिक्विड में होती है तब हम इसको यूज करते हैं. तो हियर जैसे यहाँ हमने मास लिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एनी वन कंपोनेंट. अब एनी वन कंपोनेंट दैट कैन बी solute or that can be solvent, or here in the denominator will be volume of all the component, that is volume of the solution, because all the component taken together they form the solution. And then of course multiply with 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आउट ऑफ 100 आएगा ना, बिकॉज परसेंट इटसेल्फ मतलब 100 में से कितना. अब इसको आप फर्दर इसको आप रिजोल्व कर लें. तो वॉल्यूम तो इसको हम बोलते हैं V. अगर A का निकालना है तो देन A अपॉन VS इंटू 100. इसी तरह आपने B कंपोनेंट का निकालना है तो VB अपॉन VS इंटू 100. अब आप एक चीज़ आपने नोट करी होगी इन दोनों में, द वन थिंग यू हैव नोटेड डाउन इन बोथ दीज टर्म्स, हियर मास इन ग्राम, ये भी ग्राम में और नीचे वाला भी ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो दैट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी. सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट में ये भी ml में, ये भी ml में. सपोज इफ यू टेक दिस in ml and this in ml as well, तो ml से ml cancel out, then volume percentage is also unitless quantity. Let's have one example. 35% B by V solution of ethylene glycol
इथाइलिन ग्लाइकोल जनरली हम इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइयोल, यानी दोनों कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर CH2 both the carbon molecule have 1 OH or 8, तो that is इथेन 1,2 डाइयोल, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in water, 35% of ethylene glycol in water is used as antidepressant in car radiators, where in cold countries, एज यू नो कि रेडिएटर में पानी डाला जाता है ताकि जो इंजन है वो ठंडा रहे। तो ये जो 35% V/V है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन है, ये एंटी डिटर्जेंट के रूप में यूज होता है। कहाँ पे, कार रेडिएटर में, कोल्ड कंट्रीज में। कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री जाता है तो क्या वो रेडिएटर में जो पानी वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, 35% सॉल्यूशन एक इथाइलिन ग्लाइकोल का बनाते हैं और वो उसमें डालते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको 0 से नीचे से 15 डिग्री 17 डिग्री लाइक दैट ऐसे नीचे ले आता है। बिकॉज ऑफ दैट अब 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री तक भी माइनस में 0 -5 -10 डिग्री तक भी वाटर फ्रीज नहीं होगा। तो ये जो एंटी डिटर्जेंट, अब ये 35% सॉल्यूशन का इसका क्या मतलब होगा, ये जो 35% हमने यहाँ पे लिया है, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट, ये देखो V/V है तो 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल जब आप डिजोल्व करेंगे किस में, टोटल वाटर, कितना वाटर इसमें मिलाएगा कि टोटल 100 ml हो जाए, तो वाटर का जो वॉल्यूम है दैट इज 65 ml वाटर मोलिक्यूल। तो डिजोल्व इन 65 ml वाटर, 35 ये, तो टोटल हो गया 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। अब ये जो आपका टर्म है इन सब को मिला के देन इट बिकम्स 35%, 100 से 100 कैंसिल, तो 35% V/V, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 35% इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन वाटर के अंदर यू कैन सी 35% V/V कैसे आया। Now let's move to our third term, that is mass by volume percentage, that is taken as M/V percent composition. Here now as you see, one component that is taken in mass, न्यूमरेटर है वो मास के तौर पे लिया जाता है, जो डिनोमिनेटर है यानी होल सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम के तौर पे लिया जाता है। तो वी कैन से, वी कैन डिफाइन इट, मास ऑफ any one component that will be taken in gram and volume of the whole solution, the volume of the whole solution, or you simply can say total volume of the solution, then that is taken in ml and then multiply with 100। तो ये आपका थर्ड टर्म हो गया मास परसेंटेज
m/w मास ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ये ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ द होल सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml में। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ग्राम है नीचे ml है, तो यहाँ पर जो यूनिट्स है वो कैंसिल नहीं होगी, यूनिट्स है वो कैंसिल नहीं होगी, तो m/v। तो इससे ये 3 कंपोनेंट है जो परसेंट कंपोजिशन में आते हैं, दैट इज w/w, v/v और m/v। अब आप इन न्यूमेरिकल्स को यूज़ करके जो फॉर्मूलाज हैं वो उनको आप यूटिलाइज करके और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, इन फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। हैव अ गुड डे। चलिए क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। गिवन इज 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट W/W परसेंट कंपोजिशन, W/W परसेंट कंपोजिशन, ठीक है। अभी W/W परसेंट कंपोजिशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए W/W परसेंट कंपोजिशन के लिए फॉर्मूला है WB एनी वन कंपोनेंट का और WS टोटल सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो WB इट इज़ गिवन 2.5 ग्राम और WS इट इज़ गिवन, WS में आपको दोनों का मास 75 प्लस 2.5, तो यू कैन से 2.5 प्लस 75 ग्राम into 100, then it is become 2.5 gram divided by 77.5 gram into 100। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 96.78% कंपोजिशन। अब इसके ब्रैकेट में आपको W/W जरूर मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका जो आंसर है पूरी तरह मुकम्मल कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से आप मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे। तो इस तरह से आपका ये जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो गया। सी यू।